Okay, people, so in this video, let's start with the chapter circles, objective, MCET or JEE. So, our first question here is the center and the radius. They're asking us to find the center and the radius of this given circle equation. We are going to start with a very simple question, that is, this is the given equation. Remember, whenever a circle equation is given and they're asking you to find the radius and the center, just remember to make the x square coefficient always 1. It should be always 1. So since here it is 3, you need to divide everything with 3. हमेशा x square coefficient 1 होना चाहिए, उसका coefficient of x square should always be 1. यहाँ पे 3 है इसलिए हम इसे 1 बनाएंगे, वो भी किस तरीके से, dividing by 3, dividing this whole equation with 3. So we get x square plus y square minus 6 by 3 is nothing but 2x plus 4 by 3y minus 4 by 3 equals to 0. Now since the x square coefficient is this thing, now center is nothing but minus g comma minus sep. Since we are doing for objective, that is, we get only 1 minute to solve, and this is just so simple, so this question won't come. You'll get mixing of topics. So remember, center, whenever they are giving you the x coefficient, there is minus 2 here, and the y coefficient, which is 4 by 3 here, just do it half of it and change the sign. So like here half of this 2 will be 1 and here it is minus, so make it as plus. Here half of 4 by 3 will be what? So don't do mistake, this is 2, so it becomes into 1 by 2. So this gets cancelled, you get 2 by 3. Since it is 4 by 3 here, positive 4 by 3, we make it as minus 2 by 3. So our thing is nothing but plus 1 comma minus 2 by 3 is our center. We got the center. जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उसको आपको आधा करना होता है और उसका जो साइन होता है उसको ऑपोजिट साइन. प्लस है तो माइनस करिए, माइनस है तो प्लस करिए. 4 by 3 का आधा होता है 2 by 3. इसका हियर इट इज प्लस है यहाँ पे, इसलिए हम इसको minus 2 by 3 लिखेंगे. सो यू गॉट द सेंटर. Now radius formula is something but under root g square plus f square minus c. There is no shortcut for this. You need to go. So under root g square, what is g? Like here you can go with g square is 1 square plus f square is nothing but 2 by 3 square, which is nothing but 2 square is 4 by 9. So I won't do small steps. So this is 1. So 1 plus 4 by 9 minus c. So here this is minus c. This is your constant. It is minus c means c is already minus 4. So minus of minus 4 will be plus 4. So here I can write it as plus 4. Take out the LCM now. It is nothing but 9 plus 4 plus 9 for 36 by 9, which is nothing but, add this up and you get answer as, it's not 36 by 9. Okay, so even I did a mistake here. So I took this minus 4, the question's minus 4, but I have to take the constant of when we divided by 3. Okay, so this constant when we divide by 3 and when we got 1 as our coefficient of x square, that constant we have to take. So that is minus 4 by 3 means it becomes plus 4 by 3 here. It's by 3. So here you get 12 by 9, which is nothing but 5 by 3 is your answer. So you got the radius and you got the center of this equation. Simple, understood? Thank you. So our next question is, I'm not writing the question, but I'll just speak out the question. So the question is the equation of circle, okay, with radius 3, equation of circle with radius 3 and center as point of intersection of the lines 2x plus 3y equals. So you are given the two lines. These are the two lines. 2x plus 3y is equals to 5 and 2x minus y equals to 1. So we can just send this here, it will become minus 1 equals to 0 and this will become minus 5 equals to 0. Yes, they are saying that the equation of circle with radius this 3 and center, which is intersecting points of these two lines, is the center. You need to find the equation of the circle. Okay, so radius is given, intersecting points mean intersect these two. What you can do is just like here nothing is same, so I can, this is already 1 multiplied, here I can multiply with 3 and I get 3 2s are 6, so this becomes 6 and this will become minus 3y and this becomes minus 3, right? This all I should not teach you how to do it. You should know this, okay? You're doing IIT and competitive things. So here plus 3 minus 3 gets cancelled and this you get 6 plus 2, 8x. So 8x
and then minus of minus will get plus 8 equals to 0 and 8x equals to 8 and x equals to 1. Substitute this x equals to 1 in any of these equations, so you get, so if you substitute in 2x plus 3y minus 5 equals to 0, you get, if x here, so you get 2 plus 3y minus 5 equals to 0, so 3y equals to minus 3 equals to 0 and 3y equals to 3. So this is y is equals to 1. So y भी हमें 1 आ गया है. Sorry, so what did I do? I just put this, so I got 3y minus 3. I got the y value also. You know this how to do intersecting points. So intersecting points are x comma y, means center is nothing but 1 comma 1, right? You have the radius, this is nothing but minus g comma minus f. You have the radius, so nothing but like if you just keep x square plus y square, so center is 1 comma 1 means you need to just add, just multiply by 2 and opposite sign. So here it is plus, so minus multiply, double it, so 2. When here it is 2 minus 2, half of this will be what? 1 with positive sign, we get center. Now here center is given means double it with the positive sign, double this with the positive sign, so 2x minus 2y plus c equals to 0. What is c? We know r equals to under root g square plus f square minus c, right? We know r square is nothing but 9. Here this under root goes here, just remove this under root, it becomes a square. So r square is nothing but 9. G is nothing but, g square is 1 square is 1 plus 1 square is 1 again minus c. So this will become 2, it will go there, so it will become c equals to minus 7. You get the value of c, so substitute here minus 7 and you get x square plus y square minus 2x minus 2y minus 7 equals to 0 is your answer. Is that clear? So now our next question is that if the centroid of an equilateral triangle, centroid of equilateral triangle, centroid of the equilateral triangle is 1 comma 1, okay, and its vertices are, and its vertices is, like one of the vertices is, only one vertex is given, like suppose it is a, which is minus 1 comma 2. Then equation of circumcircle is, so circumcircle means your triangle will be inside, or I'll draw the circle first. This is your triangle. They are saying that the centroid means this G is given to you as 1 comma 1 is will be equal to C, will be equal to in center, will be equal to S, and this any of this side I'm taking it as A minus 1 comma 2. Okay, simple. So we got the center as 1 comma 1. Centroid of the equilateral triangle means circle center is 1 comma 1. Clear? Understood the relation? Now since it is circle, so you can write x square plus y square, we just now read in the previous. Now 1 comma 1 means minus 2x minus 2y plus c equals to 0. Now how to take out the value of c? We don't have any r value, so we have this thing, like it passes, the circle is passing through what? Minus 1 comma 2 points. So just substitute this minus 1 square plus 2 square minus 2 into minus 1 minus 2 into 2 plus c equals to 0. So 1 plus 4 minus 2, sorry, plus 2 minus 4 plus c equals to 0. This gets cancelled and c equals to minus 3 over it. Substitute this value here, it becomes minus 3 equals to 0. This is your required equation. x square plus y square minus 2x minus 2y minus 3 equals to 0. हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में दिया है सेंट्रोइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 1 comma 1 दे दिया है. इसका मतलब सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब पूरे साइड सेम होंगे. g विल बी इक्वल टू c विल बी इक्वल टू i विल बी इक्वल टू s. मतलब अगर आपको इन सेंटर दिया रहा तो भी आप समझ जाए कि वो एक सेंटर दिया हुआ है आपको सर्कल का, तो आपको सर्कल का सेंटर दिया हुआ है 1 comma 1. तो इस हिसाब से हम पिछले क्वेश्चन में जिस हिसाब से करे थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 का हमने डबल किया था ऑपोजिट साइन के साथ x लिख दिया था, 1 का हमने डबल किया था ऑपोजिट साइन के साथ y लिख दिया था. माइनस सी थी यहाँ पे वैल्यू, हमने c की वैल्यू निकाला था प्लस c की वैल्यू. तो c की वैल्यू हमने क्या किया था, पासिंग थ्रू -1 comma 2, ये -1 comma 2 के उस पर से जा रहा है ये सर्कल, इसलिए हमने वो -1 comma 2 इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया था. ये -1 इज़ x एंड 2 इज़ y. सब्सटीट्यूट करने पे हमें c की वैल्यू मिली -3, हमने वो सब्सटीट्यूट कर दी, हमें मिल गया सर्कल इक्वेशन. ओके ठीक है. फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 0, 0. फिर एक सर्कल दिखाएगा आपको, उसके अंदर एक सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल होगा,
क्योंकि उसका आपको g बोला है 0,0, मतलब क्या अभी देखा था हमने, जस्ट नाउ वी सॉ दैट c इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0,0, सेंटर इज 0,0 एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड इज 6. तो एल्टीट्यूड मतलब हमें पता होना चाहिए ये जो ट्रायंगल का जो लेंथ होता है मतलब ये, इससे हम एल्टीट्यूड कहते हैं, हाइट को एल्टीट्यूड कहा जाता है, इससे हम 6 बोल रहे हैं, दिस इज 6 height, that is altitude of the triangle is 6. The equation of circumcircle of the triangle is, so for an equilateral triangle you need to remember s equals to g equals to c equals to everything will be equal, will give you 0,0. altitude is same as the median. This is an equilateral triangle, मतलब ये एक मीडियन की तरह एक्ट करेगा. एंड वी शुड रिमेंबर जब भी आपको एक सर्कल जब भी आपको एक ट्रायंगल दिया गया है और इसका एल्टीट्यूड है और ये 60 डिग्रीज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओके, एंड दिस इज एल्टीट्यूड मीन्स दिस एक्ट्स एज मीडियम एंड इसका रेशियो आपको पता होना चाहिए 2:3 होता है. रिमेंबर, सो हियर ऑल्सो यू शुड रिमेंबर इट्स 2:3. ओके, द रेशियो आई एम टॉकिंग अबाउट. सो r equals to ag, so I'll just give this as a b c d, so and this is g, that is nothing but centroid. So ag equals to 2/3 of ad, 2/3 of ad. We know the value of ad is something but 6, so 2/3 of into 6, so 2 is 4, so nothing but this is 4, so x square plus y square means, because since center 0,0 you don't get 2x and 2y, मतलब वो x और y का आपको नहीं मिलता है टर्म्स, तो हमें डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस मतलब विच इज़ 4 स्क्वायर विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इज योर आंसर. सो सिंपल इज योर आंसर. अंडरस्टूड, समझ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. जब से कह रहा था ट्रायंगल दे दिया था, आपको पूछा था, आपको बोला था सर्कम सर्कल है करके, तो हमने क्या किया था, ट्रायंगल उतार के फिर उसके ऊपर सर्कल बनाए थे उसके साइड्स की तरफ से. अब आपको बोल रहा है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, मतलब वही चीज़ है, सर्कल दे दिया फिर आप उसके अंदर आपको ट्रायंगल उतारना है, इसका हम बोलते हैं इंस्क्राइब कर दिया है ट्रायंगल को. अंडरस्टूड. सो इंस्क्राइब इन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन दे दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल. अभी जो साइड है उसको हम इसको नीट लाइक डायग्राम उतारेंगे जिस तरीके से ऐसा उतरेगा. ये कुछ यहाँ पे इक्विलैटरल है वगैरह वगैरह कुछ नहीं कहा जा रहा है. ओके, नहीं कहा तो गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा गया है. दे आर सेइंग इट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. Okay, the circle equation is given as x square plus y square equals to a square. Now they're asking you the side. Suppose we take this as a. ठीक है, अगर हमने ये साइड a ले लिया है सपोज, तो हमें पता है फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल यू शुड रिमेंबर दैट a इक्वल्स टू 2r sin a, राइट. सो 2r sin 60 because it's an equilateral triangle, so you get 2r sin 60 something but √3/2. This gets cancelled. ठीक है, r is nothing but a, so √3a, so a equals to √3, मतलब हर एक साइड √3a का उसमें है. समझ गए आप लोग. आपको एक सर्कल इक्वेशन दे दिया गया है, वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल से, सिंस इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इट विल बी ऑफ 60 डिग्रीज एंड sin 60 something but √3/2 and r is again a and then you cancel. ओके, चलो अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे. बोल रहे हैं कि इफ़ द लाइन्स, 2 लाइन्स दे दिए गए हैं. ओके, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2. ठीक है, 2 लाइन्स दे दिए गए हैं. द फर्स्ट लाइन इज गिवन एज 2x + 3y + 1 equals to 0 and the next line is given as 3x - y - 4. 3x - y - 4 equals to 0 lie along the diameters of a circle of circumference 10 pi. Then equation of this. So अब क्या बोल रहा है, एक सर्कल है. Okay, there is a circle. Can you see? Yeah. So these are the 2 lines, line 1 and line 2. If the line 1 and line 2 lie along the diameters of a circle, means ये एक diameter है और ये एक diameter है. Suppose अगर ये line 1 है और ये line 2 है, तो अभी डायग्राम देखते आपको समझ में आ जाना चाहिए. आज सुन एज यू सी द डायग्राम, इफ आई ड्रॉ दिस प्रॉपरली, मे बी समवट लाइक दिस.
So this act as your center. The intersecting points of line 1 and line 2 act as center. Yeah. So if you just intersect these two lines, if you get that intersecting point, if you solve these two lines, you get the center. After getting the center, what they're saying, of a circular circumference is also given to you. Circumference is something like 2 pi r, which is given to you as 10 pi. Okay, which is given to you as symbol. I'm giving the question again. If the lines, this line lie along diameters, you don't get confused, so that I'm giving you a question again. Lie along the diameters of a circle, okay, of circumference, just understand, 10 pi, then the equation of the circle is what? So first just solve these two lines, फटाफट से सॉल्व करो. ओके, तो मैंने तो सॉल्व कर लिया, आपने भी सॉल्व कर लिया होगा. हमें तो मिल गया है पॉइंट x इक्वल्स टू 1, -1, 1 x मिल गया 1, y मिल गया -1. आपको चेक कर लेना, आपको आ जाना चाहिए. दोनों का आपको सॉल्व करना है. आपको सॉल्व करने पर आपको x और y की वैल्यू मिल जाती है. नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्कमफरेंस. सर्कमफरेंस इज गिवन एज 10 pi, which is 2 pi r equals to 10 pi. So pi gets cancelled, 2 into 2 5, so r equals to 5. सिंस आपके पास आपको मिल गया सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया. आपको पता है हमने फर्स्ट सेकंड सम में ही करा था, शायद सेकंड सम में करा था. जब आपको रेडियस दिया तो आप डायरेक्टली रेडियस लिख सकते हो. आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है, √g² + f² - c. तो हम ये अंडर रूट को वहाँ भेज देते हैं, तो ये बनता था r². r is nothing but 5, so 5² is nothing but 25. g² मतलब 1 का 1, so 1² + 1² which is -c. So this will become 2, that goes out and becomes c equals to 23. आपको सब्सटीट्यूट कर देना है. आपको ये वाली पता है -1, -1 है, तो x² + y² इसका डबल विथ नेगेटिव साइन, ऑपोजिट साइन, तो ये बनेगा -2x. इसका डबल विच इज़ 2, बट इसका ऑपोजिट साइन मतलब बनेगा +2y -23 इक्वल्स टू 0 साइन. -23 क्यों भाई? +23 होना चाहिए, राइट? सॉरी -23 होना चाहिए. हाँ, अगर यहाँ पे नीटली देखोगे, हमने नीट नहीं किया, तो यहाँ पे माइनस है ये, ठीक है. ये 1² है, ये -c है. ये दोनों जाके वहाँ पे मिलेंगे 23, तो ये माइनस जाके वहाँ देखो c -c इक्वल्स टू 23 होगा, तो c इक्वल्स टू -23, तो यहाँ पे होगा -23. मिल गया आपको आंसर, समझ गए आप लोग? ये गिच्ची नहीं दिख रहा होगा, एकदम लास्ट में देखो तो गिच्ची लिखा होगा. दोनों को हमें सॉल्व करना है. आपको मिल जाता है सेंटर, इससे आपको सॉल्व करने पर आपको मिलता है रेडियस आपको फॉर्म में सब्सटीट्यूट करना है, आपको आंसर आ जाएगा. चलो भाई, नेक्स्ट वाला भी बहुत ईजी है. It's very easy. If the lines, like again line 1 and line 2 is given to you. So the line 1 is nothing but 3x - 4y - 7 equals to 0 and 2x - 3y - 5 equals to 0. ये दो lines दिए हुए हैं. Again they are acting as the diameters of the circle. दोनों का intersecting point आपको c मिलेगा. दोनों का आपने solve करना है, आपको मिलेगा c. Now what they are saying, last time आपको मिला था क्या? लास्ट टाइम को बोला गया था सर्कमफरेंस हमने लिया था 2 pi r. अब इस बार कह रहे हैं एरिया से हम लेंगे πr². एरिया की वैल्यू दी गई है 49 pi, मतलब पाई कैंसिल हो गया, तो r² होगा 49 और r मिल गया है 7. पता है r की वैल्यू है, इन दोनों को आप करोगे तो आपको मिल जाएगी c की वैल्यू. आपके लिए हम कह भी देते हैं कि c की वैल्यू यहाँ पे क्या है. सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस इज नथिंग बट यू गेट x 1, -1 आएगा. आपको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करना, सब्सटीट्यूट करना. आपको लास्ट में आंसर आना चाहिए. जब आप c की वैल्यू निकालोगे तो आपको आंसर आएगा -47. तो आपको आंसर आना चाहिए x² + y² - 2x - 2y -47 इक्वल्स टू 0. बिल्कुल पिछले वाले की तरह करना है. हमने सब दिखा दिया, r ला दिया, आपको c ला दिया. जब तो आपको सब सिर्फ इक्वेशन लाने का है. अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? सुपर क्लियर. लेट्स गो to the next. Let us see, this was the very easy questions. हम लोग दूसरे वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे. Till then bye. अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो उसको अच्छे से पोस्ट कर दीजिए. इसको अच्छी वे में आपको समझाया जाएगा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो. इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन इन अ वेरी गुड वे. Any question except these questions which I'm showing on the video. If you get any question doubt, you can just post it in the comments. Bye.